यूएफसी का जो अगला इवेंट होने वाला है, यूएफसी फाइट नाइट सर्गे स्पिवाक वर्सेस डेरेक लुइस, उसमें ब्लैक बीस्ट के अलावा भी आपको अट्रैक्शन देखने को मिलेगा, स्पेशली फॉर द इंडियन ऑडियंस। रोड Indian टू audience. यूएफ रोड टू यूएफसी का फिनाले होने जा रहा है, एंड आवर ओन किंग ऑफ लायंस अंशुल जुबली फाइट करने वाले हैं मेन इवेंट में, अगे अगेंस्ट जेका सरीगी, लाइट वेट डिवीजन Yes. की रोड टू यूएफसी का कॉन्ट्रैक्ट के लिए। Good evening, ladies and gentlemen. In today's segment of MME Hindi podcast, we are going to be discussing about our boy who's going to be fighting in the Road to UFC Lightweight Division Tournament Finals, which is going to be held this weekend on Sunday. It's going to be Saturday in the US, but it's going to be Sunday here in India, and the fights are going to start at what time? 8:30, right? 8:30 Yeah. अर्ली प्रीलिम्स, Yep. एंड Early प्रोबेबली prelims. 10:30 Prob- 11 बजे अंशुल जुबली mm. फाइट कर रहे होंगे। Yep. So, who do you have any idea who if Sony is going to be covering the prelims or something? यस, 100% सोनी पे फाइट आने वाली है, एंड अंशुल जुबली की वजह से पूरा इवेंट सोनी पे लाइव होने वाला है, एंड ऑल्सो सोनी लिव ऐप पे भी आप इसका सब देख सकते हैं। प्लस Mm. जिसके पास दोनों नहीं है, इलीगल स्ट्रीम्स आर ऑलवेज अवेलेबल Yep. Yeah, you can अपने watch it on जोखिम के TV. साथ। You can watch it on TV. So it's a very, very important day for Indian MMA and Indian MMA fans as well. We are very much looking forward to this fight. Anshul has a very, very important fight and a very, very tough fight in front of him. In front of a guy, he's going to be fighting a guy who's riding who's on a very, very good क्रेजी win streak स्ट्रिक। as well. Crazy win streak, but अपना लड़का भी कम नहीं है. He's also on a good win streak of his own, and he just came back from a very, very good win against South Korea's योंग Kyung प्यो Pyo किम। Kim. One of the, I guess he was touted to be one of the guys who's gonna come out from this tournament, right? But यस यस यस। yeah, but Anshul fought a really good fight last time, and he got the win. And so this Sunday, history is gonna be made again. So Amit, I can't wait to talk about this. But first of all, how are you doing? How have you I'm been? How was your week? थैंक यू फॉर आस्किंग, I'm doing good, एंड अंशुल जुबली फाइट करने वाले हैं रोड टू यूएफसी टूर्नामेंट फाइनल्स में। और संडे को, जैसा कि डॉनी ने बताया, फाइट होने वाली है 11 बजे के करीब, आपको ये फाइट देखने को मिलेगी। सो Mm, डोंट डोंट मिस दिस, स्टे ट्यून्ड। 11 बजे संडे को आपको ये फाइट देखने को मिलेगी, और सोनी लिव ऐप के माध्यम से, प्लस सोनी 10-2 पे आपको, और 10-1 पे ये आपको फाइट देखने को मिलेगी। तो फ्री में आपको फाइट देखने को मिल रही है, आप जा सकते देख सकते हैं। प्लीज सपोर्ट करें अंशुल mm, जुबली को, आवर ओन सुपरस्टार। एंड मेरे लिए तो ये खास इसलिए है क्योंकि खैर ऑल ओवर इंडिया हमारे लिए खास है कि हमारा एक बंदा mm, यूएफसी में रिप्रेजेंट कर रहा है हमको। लेकिन अंशुल जुबली आते हैं हमारे ही शहर देहरादून से, एंड इट्स एक प्राउड मोमेंट है हम देहरादून वालों के लिए कि हमारे शहर mm. से एक लड़का निकल के बाहर जा रहा है, हमारे स्टेट से एक लड़का निकल के बाहर जा रहा है। एंड एमएमए का मतलब ही आज के जमाने में यूएफसी है। तो अगर यूएफसी में कोई जा रहा है तो इट्स नॉट अ स्मॉल फीट, एंड Mm. I'm looking forward to the fight। अच्छी Yeah. फाइट होने वाली है। बोथ द फाइटर्स आर गुड, एंड अंशुल जुबली क्योंग प्यो किम को हरा के आ रहे हैं। Mhm. क्योंग प्यो किम, गाइस अगर आपको नहीं पता है तो इस्लाम मामेडोव के साथ इनकी फाइट हो चुकी है। No, not इस्लाम Islam Mamedov. Arman Sarukian. नो इस्लाम मामेडोव के साथ इनकी फाइट हो चुकी है, आरमान सारुकिन के साथ इनकी फाइट हो चुकी है। तो Ah. आप इनका कैलिबर देखें। इस्लाम Mm, मामेडोव का रिकॉर्ड करंटली 22-2 है। पीएफएल mm, बेलाटोर में फाइट कर चुके हैं, कर रहे हैं। mm. और आरमान सारुकिन, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, नंबर 6 रैंक यूएफसी लाइटवेट कंटेंडर हैं करंटली। उनसे फाइट कर Ah, चुके हैं कियांग प्यो किम, और उनको एक बहुत ही क्लोज फाइट में उन्होंने हराया है। सो दैट मींस लड़के में कैलिबर है, लड़के में कैलिबर है। जस्ट और कैलिबर तो खैर छोटी बात हो गई अब बोलना, पर व्हाट एन अमेजिंग फाइटर अंशुल इज, द बेस्ट दैट इंडिया हैज प्रोड्यूस्ड अप टिल नाउ। आई एम श्योर I, अंशुल वोंट बी द ओनली वन, आगे भी बहुत आने वाले हैं, लेकिन करंटली अंशुल इज द
prospect that जिसके ऊपर हमारी hopes हैं, and I'm really really pumped up for the fight. और मैं इंतजार I'm really, I can't wait for this fight to come as soon as Yeah. possible. Sunday का Neither इंतजार कर रहा हूँ मैं तो. neither can I, but Kyung Pyo Kim didn't fight Islam Amirov. That fight got cancelled. Is it? Please, yes, Okay, I'm sorry. please go and I'm check. sorry. I'm sorry. Yeah, yeah. I told you. And you do this next time. You keep your laptop open just to don't get confused or mixed up with the facts. But anyway, sure. Forget about all that. Yeah, just like Amit said, um, the opponent that Anshul defeated last time, Kyung Pyo Kim, he's one of the best lightweights in all over Asia, and the performance that he put up in that particular fight, it was so good. And I especially love that part in the third round. Remember when The his slap. coach, yeah, when his coach slapped him. Shout out to Coach Mike. Yeah, Shout out to exactly. Coach Mike. Shout out to That Coach slap, Mike. I think, वो थप्पड़ ने थर्ड राउंड में, सेकंड राउंड के एंड में जो थकावट थी, Yeah, वो एक थप्पड़ ने दूर कर दी. Shout yeah, out to yeah, Coach Mike. What a brilliant coach he is. What a yeah. brilliant coach. मतलब that strategy really worked. और थर्ड राउंड में आपने जो रूप देखा अंशुल का, Yeah. all credit goes to Soma Fight Club and Coach Mm. Mike. And plus, And and his original coach, the one where he started, CFC, yeah, yeah, Coach Sid, yeah, and Coach Deepak जो उनके न्यूट्रिशनल कोच हैं. yeah. And the thing is that you have to give props to Anshul as well. Like at times, well, it's a fight, and fighters like sometimes like they lose themselves in there, and you have to. He just needs a small little push from Coach Mike, and that was it. He just turned it back on, and how he turned it on, you could see in the performance in that round. So hats off to him as well, and how he came back into. Not, sorry, it's not that he was in that much of trouble in that particular fight, but yeah, he needed he needed that little push to show that he was not just there to participate. He was not just there to just be a stepping stone for that guy who was touted to win the whole tournament. It was a disappointment for Kyung Pyo Kim, but a celebration for India. Now that we've talked about all that, please tell me, Amit. Oh man, what do you think about this particular fight? Do I know you're very very excited, and what do you think about this particular fight? Before coming to this fight, before coming to this fight, let's discuss about Jeka Sarigi. जेका सारिगी, आई एम इनका जो निकनेम है थोड़ा सा बहुत ही डिफिकल्ट है प्रोनाउंस करने का. लेट मी प्रोनाउंस इट. इट्स सी Tendangan Mot. सी तेंदागन मौत. तो Hmm. सीधे मौत से रिलेट कर दिया है इन्होंने. एंड आई रियली, इट्स अ I वेरी know, man. यूनिक, इट्स अ वेरी यूनिक निकनेम. एंड इंडोनेशिया में देयर सम कुछ इंडियन लैंग्वेजेस का थोड़ा मिक्सचर है, सो मे बी इज इट रिलेटेड टू दैट और नॉट, नॉट श्योर, बट Yeah. बहुत ही बढ़िया फाइटर हैं. नॉकआउट पंच. एंड गाइस, अगर आप एमएमए हिंदी यूट्यूब चैनल जाके देखें तो अंशुल के हर वीडियो के नीचे इंडोनेशिया के 10 बंदों ने कमेंट कर रखा है, जेका विल केओ, जेका विल केओ. आप जाके देखें ये Hmm. वीडियो. ना देखें Yeah. कोई बात नहीं, कमेंट जाके जरूर पढ़ें, बिकॉज इंडोनेशिया में इस बंदे ने एक अपना रौला क्रिएट किया हुआ है, Hmm. एक अपना Yeah. पर्सोना क्रिएट किया हुआ है इस बंदे ने. वन Yeah. प्राइड चैंपियनशिप करके Yeah. इंडोनेशिया की एक चैंपियनशिप है, उसमें ये चैंपियन रह चुके हैं और Hmm. बहुत इनिशियल टाइम से उसमें फाइट कर रहे हैं, बहुत अच्छी फाइट्स ले रहे हैं उसमें. तो और करंटली 6 फाइट की विन स्ट्रीक में से हैं, और उन 6 फाइट की विन स्ट्रीक में से एक फाइट पवन मान सिंह वाली थी. एंड पिलर टू Now he's on a five fight winning streak. ओके, इज ऑन अ 5 फाइट विन स्ट्रीक. और जो इनकी सेकंड लास्ट फाइट थी पवन मान सिंह के अगेंस्ट, Hmm. अगर वो आपने देखी तो इंडिया के पवन मान सिंह फॉर्मर एसएफएल वेल्टरवेट चैंपियन, फॉर्मर एसएफएल लाइटवेट चैंपियन, द ओरिजिनल चैंप कॉनर मैग्रेगर से पहले बने थे. Hmm. तो आई एम सॉरी, कॉनर मैग्रेगर के बाद बने थे. तो इंडिया के पास भी एक चैंप था, लेकिन बहुत ही मैं ये बोलूंगा, मतलब
एक अच्छी फाइट देखने को मिली थी हमें। हालाँकि एक स्पिनिंग बैक फिस्ट की वजह से Yeah. राउंड 3 में नॉकआउट लॉस Mm. मिली थी Yeah. पवन मान सिंह को। अच्छा उन्होंने अपना परिचय दिया, लेकिन Mm. जेका सरीगी की वी शुड नॉट मिस दिस पावर। बहुत ही डेवास्टेटिंग पावर उनके पास है। पवन मान के साथ आपने Mm. इसे देखा और जो उनके ओपोनेंट थे कोरिया के वॉन कॉन Mm. वॉन बिन आई एम सॉरी वॉन बिन की, उनको पहले राउंड में नॉकआउट किया था। ढाई ढाई मिनट के 2:40 के करीब की फाइट थी और पहले Yeah. राउंड में जिस तरीके से नॉकआउट किया और जो पंच उन्होंने स्ट्रेट पंच निकाला था, माय गॉड! इतनी पावर उन्होंने जनरेट की होगी उससे तो अ, कोई अगर कोच होगा तो वो आपको डिटेल में बताएगा कि अपना पावर ट्रांसफर कैसे किया उन्होंने काफ से हिप, हिप से सीधे अ, फिस्ट में इतना पावर जनरेट करना दैट वाज़ अमेजिंग Mm. टू सी। Yeah. बिकॉज़ आई हैव हर्ड सम कोचेस जो इसके बारे में बात करते हैं, तो पावर ट्रांसफर करना बॉक्सिंग में अगर आप जो लोग बॉक्सिंग करते हैं उन्हें मालूम होगा ये चीज़ से। Mm-hmm. Yeah. तो पावर ट्रांसफर करना इट्स और जो पावर उन्होंने जनरेट की दैट वाज़ एक सिंगल पंच केओ दैट्स इट। और ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं मिडल वेट में, हेवी वेट में। तो Mm-hmm. आई वाज़ रियली इम्प्रेस्ड, बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ मैं उनकी फाइट से। और जैसा कि मैंने पहले कहा इंडोनेशिया के जितने भी बंदों ने मेरा वीडियो देखा है, सब ने कमेंट कर करके यू नो कि जेका विल केओ अंशुल। मैंने जाके इनकी फाइट्स देखी और फाइट्स में मुझे देखने को मिला कि थोड़ा बहुत सबमिशन स्किल्स भी इनके पास हैं, Yeah. थोड़ी बहुत ग्रैपलिंग भी इनके पास हैं। Mm-hmm. तो आई एम श्योर एक बहुत ही क्लोज कॉन्टेस्ट होने वाला है लाइट वेट डिवीजन Mm. में एंड आई एम होपिंग फॉर अ वेरी गुड फाइट Mm-hmm. फ्रॉम बोथ। Yeah. Another thing is that this guy, he looks like you said, not another thing, like you said, this guy looks very well rounded. He has as many KOs, and he has as many submissions. I think he has, let me see, 13 wins and 13 and 2, two losses. So all of his wins have come by knockouts and submissions and decisions. But 6 इनके नॉकआउट हैं, 4 इनकी सबमिशन है mhm, और एक yeah. एकमात्र डिसीजन है इनका जो वन प्राइड एमएमए में था इनका। Mm. And so far in the UFC, in the road to UFC tournament, he has been knocking people out left, right, and 100% center. नॉकआउट Yeah. रेट है अब तक। आई एम श्योर And दिस yeah, इज नॉट गोइंग टू लास्ट बट विल सी। yeah, yeah. What I want to say is that he really has power in his hands, and yeah, he look like, from his record and from what I've seen, he looks quite sound on the ground as well. But then again, when you come to the UFC, when you fight guys in the UFC, it's a totally different story. And our boy Anshul is also, like, he also has knockouts of his own, and he's completely undefeated, even in the amateur circle as well, even the amateur circuit, and even in the pro circuit. And yeah, I think yeah, I think Anshul can match him even in the stand up, because I believe that Anshul is much more taller than him, so he will have the height advantage and the reach advantage. But he has to be careful of his power, and I believe that this guy will also be careful about Anshul's power as well. So I believe it's gonna be a very close fight. This one, we might. What do you think? How long this fight's gonna last? Well, please don't ask that question because I have been wrong I don't think. many Yeah, times. I don't But think. I don't think even जितना I भी can answer this question. जितना भी ये लास्ट हो, होपफुली द विक्ट्री शुड बी द Yeah, इंडियन वे। yeah. Even I believe that Anshul has the edge over this. But yeah, then again, that's the Indian in me talking, and obviously, I'll always side with my own countrymen. No, no offense to Jeka or no disrespect, but yeah, I'll like, your people will side for you. I'm also siding with my own people, right? So, 100%। but yeah, this fight looks very interesting. I think it. I think if this fight lasts for all 3 rounds, there's a possibility that this fight might even be fight of the night. You know, and if it lasts for 3 rounds, and if both of them, they put up a good show, Dana White, he will reward you
For your performance, he will reward दोनों you. को कॉन्ट्रैक्ट Yeah, दिया जा सकता है। there's a possibility for that. So that's the thing about Dana White. Dana White, he's the boss. He has the power, and he will do that. And Anshul has given a very good account of himself in the last fight. So yeah, I'm expecting this to be a good fight. And from what I've seen, Anshul's striking has improved so much from you know from his previous performances. And the And thing, the one thing, let me just add, the one thing that I love about Anshul is his patience. That's the one thing that whether it's on the feet or on the ground, because from what I've seen in his previous fights, even when he takes people to the ground, he doesn't he doesn't go too crazy. He takes his time. Like, okay, the fight looks fast because obviously it is fast, but when you look at it with a much more keener eye, you can see that the guy is very patient on the ground. Even on the feet also, he's very patient. Even last time when he fought Red Horse, he was very, very patient. So yeah, I think this is going to be key for him to to secure a win. And considering the fact that Jeka has been submitted on the ground twice, both of his losses came on the ground. So I think Anshul's wrestling might give him the edge in this fight. मे बी एंड द बेस्ट थिंग अबाउट अंशुल इज दैट इनके पास एक बहुत बढ़िया कोच रहा है शुरुआत से ही। तो Yeah, सिद्धार्थ सिंह एंड जब मैंने सिद्धार्थ सिंह से बात की तो उन्होंने मुझे ये कहा कि मैं अपने जितने भी फाइटर्स हैं उनको क्रॉस प्रमोशन करने से, क्रॉस ट्रेन करने से बिल्कुल नहीं रोकता हूँ। एंड बाय क्रॉस ट्रेन आई मीन डिफरेंट जिम में जाकर, डिफरेंट yeah, सेटअप्स में जाके ट्रेन करना। द बेस्ट थिंग hmm, आपने एकेए मैंड्रिम बीच गोवा में ट्रेन करते हुए देखा होगा अंशुल जुबली को। hmm, क्रॉस फाइट में तो करते ही हैं वो ट्रेन क्रॉसफिट में, वहाँ पे भी करते हैं। उसके साथ ही आपने अ, जैसा कि अभी डॉनी ने कहा इनके पास बहुत अच्छी बॉक्सिंग है। उसके पीछे का राज़ है इनका टोकास बॉक्सिंग अकेडमी में जाना। तो दिल्ली में टोकास बॉक्सिंग अकेडमी है, वहाँ जाके ये कॉमनवेल्थ लेवल के बॉक्सर्स, ओलंपिक लेवल hmm, बॉक्सर्स के साथ ट्रेन कर चुके हैं। तो इनकी जो डिफरेंट फैसेट्स हैं कॉम्बैट स्पोर्ट के, उनमें अच्छा होने का यही सबसे बढ़िया yeah, जो कारण है। बीजेजे के लिए देयर इज़ नो बेटर अल्टरनेटिव इन इंडिया देन सिद्धार्थ सिंह एंड सीएफसी टीम। yeah, साथ में बॉक्सिंग के लिए आप टोकास जा रहे हैं, उसके बाद आप सोमा फाइट क्लब जा रहे हैं, कोच माइक hmm, के अंडर। hmm, न्यूट्रिशनिस्ट इनके बहुत बढ़िया हैं, मिस्टर दीपक एंड yeah, बहुत ही आई सैल्यूट सिद्धार्थ, मैसिव yeah, रिस्पेक्ट टू यू, प्रॉप्स टू यू कि आपने इन्हें डिफरेंट जगह जाने के लिए yeah, एनकरेज किया। yeah, आपकी वजह से थोड़ा जो आपने एनकरेजमेंट दिया उनको, उसकी वजह से आज ये फाइटर में थोड़ा बहुत हाथ सबका होता है, तो उसमें भी आपका योगदान है। एंड hmm, अ, एज़ यूजुअल बोलने की ज़रूरत नहीं है, बट अंशुल जुबली का तो डेडिकेशन वी ऑल नो। बहुत ज़्यादा रोल रहा है उनकी परसेवरेंस का। एक समय ऐसा भी hmm, आया था जब ये स्पोर्ट छोड़ने वाले थे, लेकिन उनके क्लोज़ सर्किट में उनको मनाया गया एंड बाय मनाया गया आई मीन्स ही वाज़ नॉट क्विटिंग, बट उनकी सिचुएशंस ऐसी हो गई थी कुछ कि उन्हें क्विट करना पड़ सकता था। लेकिन अ, सपोर्ट मिला अपने पीयर्स का एंड ही हंग ऑन hmm, एंड आप देखें आज यूएफसी के दरवाजे पे खड़े हैं वो। तो इट्स इट्स yeah, बीन अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी। एक रियल बॉलीवुड टाइप मसाला मूवी बन सकती है इस पे। yeah, yeah. You're कमिंग right. You're right. You're right about that. And I गो hope अहेड। that one fine day and a movie will be made on Anshul. I would watch that, man, for sure. I would watch that because the guy is leading by example, and he's a good. He's a he's not just a good fighter. He looks like a good human being as well, and you know how he represented the country, how he fought, how he speaks, his the way he presents himself, you inside and outside the cage, like everything, he, like it just looks so good, you know, for the future. And like, okay, at the end of the day, all that doesn't matter. The fighting does. But even as a fighter, also, he looks like he looks like a guy who keeps on developing and growing skills every day. So regarding his future,
one I can only say that it looks very very bright for him. So, but yeah, as of now, let's not think. Let's not talk about the future and what it holds. एंड आई There's थिंक a there's a गेम प्लान very जो गेम there's प्लान a है वो ऑलरेडी सोमा फाइट क्लब एंड जो yeah उनकी पूरी टीम है अंशुल की वो बना चुके होंगे बट आई थिंक देयर yeah माइट बी ए लूप होल इन जेका सारिगीज गेम दैट इज हीज चिन एंड व्हाई आई एम सेइंग द चिन इज बिकॉज अगर आपने इनकी ज्यादातर फाइट्स देखी होंगी तो ही हैज बीन क्रैक्ड मेनी टाइम्स दैट मीन्स अगर कोई अच्छा बॉक्सर उनके साथ खड़ा है तो ये लूप होल जरूर वो उसको चाहेगा उसे एक्सपोज करना mm, बिकॉज इनकी जो मैंने पुरानी फाइट्स देखी हैं उनमें इनकी ये चीज बहुत देखी गई है कि जो फाइटर है वो इनकी बिकॉज़ इनके हाथ ज़्यादातर ऊपर या नीचे रहते हैं ये, बहुत नीचे mm, स्टांस से फाइट करते हैं। इनकी पुरानी फाइट्स की बात कर रहा हूँ मैं, जो mm, इनकी व वन प्राइड एमएमए मैंने फाइट्स देखी थी, उनमें। mm, तो मेबी एक लूप होल हो सकता है ये, बाकी तो प्रेजेंस ऑफ माइंड पे भी बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट करता है पूरा गेम एंड लेट्स सी mm, व्हाट हैपेंस। क्या फाइट प्लान लेके जेका आते हैं, क्या फाइट प्लान लेके mm, अंशुल आते हैं? mm. We'll have to just wait and watch, and I can't wait for that. Yeah. Regarding other things like conditioning and all, both fighters they have been used to I mean three 3 round round fight. fights. So yeah, I don't think that's really going to be a problem, and I believe that Anshul has already landed in He is, Vegas. yes, he's already So in Vegas. I'm sure being there early will help with with acclimatization and all. So I don't know about Jeka because I don't follow him. So Neither do I. yeah, so I'm just praying and hoping that the result will come our way. But at the same time, I'm hoping that it's gonna be a good fight because I'll be honest with you. I believe that both of them they deserve to be in the UFC. Both of them they will be very very good representatives of South Asia and Southeast Asia in the UFC. So yeah, I'm just hoping for a good fight and bus. That's it, man. But then at the same time, I want our boy to win. एंड अगर बात करें इनकी जो पिछली फाइट्स हैं उनकी, तो आप अंशुल का करियर देखें, करंटली 6 और 0 का इनका रिकॉर्ड है Hmm. एंड Yeah, इन्होंने स्टार्टिंग की अपनी जो इनका एमेच्योर करियर था, उसमें ये फिलीपींस से लेकर इंटरनेशनल टूर्नामेंट से फाइट करने के बाद, इनकी पहली जो फाइट थी, वो एक लेट नोटिस फाइट थी अगेंस्ट yeah, नन अदर देन संजीत बुधवार, जो करंट yeah. में मैट्रिक्स फाइट नाइट के चैंपियन हैं। उनके साथ इनकी फाइट थी, वो भी एक Mm, वीक और 1 हफ्ते और 2 हफ्ते के लेट नोटिस पे इन्होंने ये फाइट एक्सेप्ट करी थी। yeah, और वन साइडेड डोमिनेशन उस फाइट में हुआ था। तो आप देखें इनका कैलिबर exactly. उस समय से, आज जो Yeah. चैंपियन है उनको ये 3-4 साल पहले हरा चुके थे। Mm. तो उसके बाद इनकी फाइट रंजीत के साथ हुई, आई एम सॉरी, रविंद्रन के साथ, इज़ इट रविंद्रन और Amit Raj, उसके बाद इनकी फाइट Amit Raj, एमएफएन, उसके and बाद Raji इनकी फाइट Chandran. एमएफएन 3 में अमित राज के साथ हुई। अगेन दोनों की थोड़ा हाइट का एडवांटेज था अंशुल के पास, तो वो भी डोमिनेट कर गए। रंजीत के साथ इनकी फाइट वो एक टीकेओ फिनिश थी। Yeah. श्रीकांत शेखर के अगेंस्ट अनदर रेसलिंग क्लिनिक देखने को मिला हमको, और Yes. महमूद के साथ भी सिमिलर एक Yeah. राउंड 1 में Yeah. बिल्कुल Triangle आउटक्लास show. कर दिया, बिल्कुल आउटक्लास कर दिया अपने Yeah. इरानियन ओपोनेंट को। Yeah. एंड उसके बाद इन्होंने एज़ यूजुअल कॉल आउट किया था एंड 1 साल के ब्रेक के बाद हम इन्हें देखते हैं अगेंस्ट Kyung Pyo क्यंग प्यो Kim. किम उनकी फाइट में Yeah. इन रोड टू यूएफसी। Yeah. एंड क्यंग से क्यंग प्यो किम से फाइट करने से पहले इनकी पैट्रिक शो ओसामी के साथ फाइट थी Mm. एंड पैट्रिक That शो fight was cancelled because the opponent couldn't make it. इनके जो ओपोनेंट थे शो पैट्रिक ओसामी, वो वेट मेक नहीं कर पाए थे Mm. एंड वो भी बहुत अच्छे फाइटर हैं, हालांकि उन्होंने Mm. वेट मिस किया था, लेकिन करंटली Mm-hmm. वो राइजन में फाइट कर रहे हैं। उनकी एक फाइट ऑलरेडी हो Mm. चुकी है एंड आप उसके बाद क्यंग प्यो किम की फाइट सभी ने देखी है इनकी। अब वो फाइट Mm. करने जा रहे हैं जेका सारीगी को। Yeah. डॉनी, ब्यूटीफुल Yeah, करियर man. मैन, बहुत ही Beautiful ब्रिलियंटली career, but yeah, when I came to know that his first fight was with Sanjeet Budwar in the
in the pro circuit, I was like, wow, man, this guy really deserved that name, King of Lions, because in his first fight, he was thrown with a lion like Sanjeet Budwar. And wow, I love that fight. Yeah, you were right. Like, it was a wrestling clinic. But, even though the fight was mostly on the ground, you could see, like, even Sanjeet was not doing that bad, but that bad on the ground, he was still fighting. And yeah, Anshul had the most control in that particular fight. But yeah, there were moments when Sanjeet looked dangerous. But the transitions that the transitions and the little changes that, and these little things that Anshul did and made during that particular fight, and how calm he looked despite fighting against a guy who's a seasoned opponent, and like almost a veteran at that particular point of time. Like, not a veteran, how would I say, like much more experienced than him. Like, to show that kind of presence of mind, like in a you know in a very tense situation, fighting Sanjeet Budwar, if you make one mistake, you're gonna get knocked the fuck out. 100%. Simple. You make one mistake, you drop your hand like that, his right hand or left hand is coming to knock you the fuck out. It's that simple. If you don't believe me, you can ask any of those guys who's fought him and who made small mistakes with him. And yeah, but Sanjeet, I'm sorry, but Anshul did show very like strong presence of mind there. The calmness was there. Everything, like, he did really well. He used his reach really well. So yeah, he is. I mean, I believe that his experience in the amateur circuit has helped him a lot. And let's not forget that he's undefeated as well in the amateur circuit, right? So yeah, he showed that thing with he showed that he was in that particular fight against Sanjeet Budwar. When I watched it, I felt like this guy has the makings to be a very good. I mean, to be a star of Indian MMA, and he showed it. And what cemented that fact in my mind was in that fight against Shrikant Shekhar. So yeah, Shrikant Shekhar open like a crazy person, like, and he deserves that name as well, Captain कैप्टन Crazy. क्रेजी। Yeah, that's how Shrikant Shekhar fights. और But यही उनकी फाइट का इस फाइट का डाउनफॉल यहीं से शुरू हुआ। ही वेंट इन क्रेजी और उसके बाद एक के बाद एक टेक डाउन, एक के बाद एक टेक डाउन, एक के yeah, बाद एक टेक डाउन। संजीत सॉरी श्रीकांत टेक डाउन के लिए गए, उसको रिवर्स करके yeah, इन्होंने अपना टेक डाउन लिया। सो yeah. रेस्लिंग क्लिनिक अगेन। Yeah, exactly, man. And yeah, it was a wrestling clinic, but it was another patient, बट आई display थिंक from Anshul. ऑल And प्रॉप्स टू श्रीकांत। राउंड 1 के एंड में उन्होंने जो श्रीकांत yeah, अंशुल जुबली ने ब्यूटीफुल किमूरा से लेकर बहुत सारे mm, हैंड स्ट्रेचेस उन्होंने लगाए बट yeah, ही Shrikant नेवर got away टैप्ड। from that. Yeah, he श्रीकांत never नेवर tapped, टैप्ड and मैन। even श्रीकांत, even towards the end of प्रॉप्स the टू round, यू, even प्रॉप्स टू towards यू the end of the श्रीकांत। round, he still got out of it. He still got out हुँ, of it. So yeah, but yeah, I'm sure that yeah, he lost the second and third round. And but yeah, that particular first round, I think a lot of energy was expended by Shrikant. So yeah, और but इतना एनर्जी सैपिंग होने के बाद अंशुल ने थोड़ा-सा हाथ खोलने शुरू किए उस yeah, सेकंड yeah, राउंड में। yeah, इट yeah, इट yeah. लुक्ड रियली गुड क्योंकि एक वो Mm, स्ट्रैटेजी कितनी बढ़िया है कि पहले आप थका दो एक बंदे को, mm, उसके बाद आप अपना बॉक्सिंग से इट वाज़ रियली गुड। yeah, yeah. So yeah, I believe, like, that could be one of the game plans that they might use against Jeka as well. So yeah, we'll see what happens when the fight goes to the ground, or whether I don't really know, because obviously I'm not a coach. So yeah, it was in that particular fight. That was the fight which showed to me that this guy he's gonna be a star of Indian He's MMA gonna go for big. sure. He's gonna go big. I mean, you can see the improvement which he's made with each and every fight. He already has the mental caliber for it, and now
his skills are also improving, which is only gonna bode well for him in the future. और इस स्किल्स का मुज़ाहिरा हमें और इंटरनेशनल लेवल पे देखने को मिला जब एमएफएन 5 Mm. एमएफएन 5 जो हुआ था Fence वला six. I'm एमएफएन a 6 fence आई एम six. सॉरी और जो भी डॉनी ने कहा वो सारा हमें देखने को मिला एमएफएन 6 पलाजे वर्साचे दुबई में Mm-hmm. महमूदियन के साथ इनकी फाइट हुई थी मेन इवेंट था एंड आई थिंक 2 मिनट 30 सेकेंड्स की फाइट थी और Yeah. बड़ा ब्यूटीफुल सबमिशन Yeah. एकदम से टेक डाउन लिया टेक डाउन Mm-hmm. में अपनी पोजीशन के लिए जॉकिंग फॉर द पोजीशन एक बार Yeah. पोजीशन मिली उसके बाद Yeah. आर्म ट्रायंगल एंड दैट्स ऑल Yeah. शी रोट Yeah. मतलब Yeah. कैजुअल फैंस के नाम पे एक इट गिव्स यू अ लिटिल बिट ऑफ Yeah. लेजिटिमेसी Yeah. लेकिन हम ऑलरेडी ज्यादातर लोग जानते थे कि ये लंबी रेस का घोड़ा है एंड Mm-hmm. we'll have to see on Sunday. All of India is watching. Yeah, but in that particular fight, it didn't seem much to me, considering Mahmoodian's record and all. Like, I Hmm. was like, okay, fine. Let's see what happens next fight. But that performance against Kyung Pyo Kim, man, like it was like all of his previous fights, you know, like what he learned, what he took from all of them, just culminated in that, and you know how he displayed his skills in that particular fight. Ah, man, it Super, man. was Super. in it was for me. It was a victory, a well-deserved victory, and as shocked as the Koreans were after that, that split decision, for me it was a victory. एंड ऑनेस्टली बोलूँ तो स्प्लिट डिसीजन में मुझे थोड़ा डर लगा जब स्प्लिट डिसीजन बोला Yeah, गया ये क्योंकि exactly. Yeah. आई आई इमीडिएटली थॉट कि सेकंड राउंड थोड़ा बहुत चलो नॉट थोड़ा बहुत Yeah. सेकंड राउंड वी लॉस्ट Mm-hmm. 100% वी लॉस्ट लेकिन Mm-hmm. फर्स्ट और थर्ड राउंड फर्स्ट राउंड डेफिनेटली वी वॉन Yeah. सेकंड राउंड वी लॉस्ट वी Yeah. लॉस्ट मे बी थोड़ा बहुत बाइस लेके बोल सकते हैं इट वाज 50 50 Mm. 70 30 चलो ठीक है थर्ड राउंड वी डेफिनेटली वॉन थर्ड Yeah. राउंड भी We won 50 third round. थर्ड राउंड Yeah. थोड़ा क्लोज था लेकिन वी डेफिनेटली वॉन जितने स्ट्राइक्स क्लियरली लैंड किए अंशुल ने तो आई थिंक स्प्लिट डिसीजन तो होना ही नहीं चाहिए था Yeah. इट शुड हैव बीन अ मेजॉरिटी डिसीजन 29 Mm-hmm. 28 बट चलो कोई बात नहीं एट द एंड ऑफ द डे विक्ट्री हमारे पास अंत भला तो सब भला विक्ट्री हमारे Yeah. पास आई एंड फाइनली फाइनल्स में हमें देखने को मिलेगा यूएफसी फाइट नाइट सर्जे स्पीवाक वर्सेस डेरेक लुइस में Yeah. Another great fight night. But yeah, for us Indians, the one that fight that really matters is gonna be Anshul's fight. अंशुल जुबली एंड जेका सारीगी एंड Yeah. गाइज जेका के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं तो जेका इंडोनेशिया के पहले फाइटर हो सकते हैं जो यूएफसी में जाएं अगर वो So चाहे जीतें वो या फिर उन्हें बाद में कॉन्ट्रैक्ट मिले बट इंडोनेशिया के पहले फाइटर डेफिनेटली वो जरूर बनेंगे मेरे हिसाब yeah, से and for us, Anshul is going to be the second fighter who. Yeah, Anshul is the first Indian fighter who fought and won the UFC, but Anshul is the second fighter from India who's represented us in the UFC. फर्स्ट वन बीइंग भरत खंडारे Yeah, yeah, that didn't end well. यूएफसी फाइट नाइट चाइना अगर आप लोगों को Yeah, याद होगा तो yeah. Bisping versus Kelvin Gastelum. बिस्पिंग वर्सेस कैल्विन गैस्टम राइट बिफोर एक 2 हफ्ते के शॉर्ट नोटिस पे बिस्पिंग ने फाइट एक्सेप्ट किया था Yeah. वो वाला फाइट कार्ड अपनी बेल्ट जीएसपी से हारने के बाद Mm. एंड ब्रूटल नॉकआउट प्लस प्लस फ्रांसिस एंगानू ने ब्रूटल नॉकआउट किया था कर्टिस रेजर Yeah. ब्लेड्स को And आई let's स्टिल not रिमेम्बर दैट फाइट कार्ड and let's not forget Zhang Weili also. She defeated Jessica Andrade in that particular fight too. नो That was it. अरे नहीं ये तो अभी लेटेस्ट है 2016 की बात है वो तो नो 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 Okay, okay, fine. If I'm wrong, then I'm sorry. Okay. वेली I thought it जैंग was. वन वन द टाइटल इन 2019 मैं 2016 17 की फाइट की बात कर रहा हूँ Okay, fine. Never mind. If I'm wrong, then yeah, I guess I'm यूएफसी wrong. Yeah. यूएफसी हर साल एक बार चाइना जाता है कोविड के बाद से नहीं गया है एंड थैंक गॉड वो नहीं गए हैं Mm. एंड बट कमिंग बैक टू द टॉपिक फाइट नाइट बढ़िया होने वाली है तो एनी लास्टिंग वर्ड्स फॉर अंशुल अंशुल्स फाइट My yeah, I just want to say all the best to him, man. Whatever the results are, we'll always support you as fans of, as your fans and as fans of the sport in the country, and as always, each and every fighter.
we love you and we support you. But for this one is particularly for Anshul Jubli. Like, do your best, and I'm sure you have made your own preparations for that, and I hope that all of that comes to fruition, and I hope that you get the contract. Bas, that is all. May God bless you. 100%, मे गॉड ब्लेस यू एंड कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद आप जब दोबारा देहरादून आएंगे, इट वुड बी अ साइट टू बिहोल्ड. Yeah, होपफुली आई विल बी देयर एंड let's yeah, see. Let's go Anshul. Let's go yeah. Anshul Let's Jubli. go, Let's go Anshul. India. Namaste UFC. Yeah, yeah. India is here. And as always, again we are reminding, please do not miss 5th of February, 10:30, 11, Anshul Jubli versus Jeka Sarigi, Road to UFC Lightweight Division final. Please do Yes. not miss it. We'll see you on 5th of February. Take care, Yeah. guys. It's a Good night. wrap.